اور ایم جے خان اس کے پریزیڈنٹ تھے. بامبے والا بڑے ایکٹیو تھے اس زمانے میں. لیگ براؤن واز دا میئر اینڈ گارڈن کوان واز دا میئر پرو ٹیمپ, جنہوں نے بہت ساری چیزیں کی تھی اس زمانے کے. بلٹ پروف گلاسز لگائے تھے جو کہ آپ کو دکھتے ہوں گے سی اسٹور میں بہت جگہ پہ. پولیس کی ٹریننگ کرائی تھی اور پولیس سے ٹریننگ کرائی تھی ہمارے لوگوں کی, اور انٹریکشن بڑھا دیا تھا. ایک آفیسر یہاں پر تھے اور ابھی بھی شاید ہیں, مظفر صدیق صاحب. ہی واز اپوائنٹڈ ایز اے لیازون فار دا کمیونٹی. اب اس کے بہت سارے پہلو ہیں اگر کم ٹو تھنک آف اٹ. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر 330 ملین کی پاپولیشن ہے, اس سے زیادہ یہاں پر گن ہے, 340 ملین ہوں گی اکارڈنگ ٹو ون ایسٹیمیٹ. تو دیٹ گیوز ایکسیس ٹو دا گن and hence availability of the gun and hence probably the violence. ٹیمپٹیشن آف کیش جو ہے سی اسٹور میں سب سے زیادہ ہوتا ہے, اس لیے کہ کیش پیسے پڑے ہوتے ہیں اور آ کے مانگتے ہیں, $5 ہو یا $50 ہو, they just need that much and if you don't give it, unfortunately you are killed. Poverty is one of the basic reason in these neighborhoods etc. Lack of education, broken families, single parent families, these are the different backgrounds. بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو شروع ہوئی, کم ٹو تھنک آف اٹ, ہم نے تھوڑے دن پہلے ایک ہم نے میٹنگ کی تھی زوم پہ, اس میں یہ کیا تھا. تو hence I kind of I've got that background in mind. Slavery, segregation after that, after the emancipation, racism, inequality, unequal opportunity, etc etc. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے پاورٹی جو بڑی ہوئی ہے یہاں پر, خاص کر کے بلیکس اینڈ مائنورٹی میں. That becomes the issue and that is the cause. Mostly ہمیں کیوں پتہ چلتا ہے؟ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ we look for the news of our people in the news, which I suppose this was one of the news. Poonwalla was one of the leader in the Jannat Ismaili community کے مکھی تھے وہ, جیسے ہمارے مکھی ہیں ڈاکٹر مظاہر خان یہاں پر PGH کے, وہ ہماری جماعت کے مکھی تھے. موسٹلی سی اسٹور ہمارے لوگوں کے بہت زیادہ ہیں اینڈ ہینس سی اسٹور, جیسے میں نے کہا کہ ٹیمپٹیشن بہت ہوتا ہے, کیش ہوتا ہے اور نہیں دیتے ہیں تو یہ اس قسم کے وائلنس ہو جاتے ہیں. اور ہمارے لوگوں میں بہت چونکہ سی اسٹور ہیں اس لیے ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے ڈیتھ وغیرہ اور اس قسم کی مرڈرس. بٹ دا فیکٹ از کہ اٹس بین ہیپننگ آلموسٹ ایوری ڈے in all the communities whosoever owns tea stores. اب یہ ہوا ہے کہ come to think of it کہ 20 سال پہلے جب میں آپ کو بتایا کہ 95-2000 بیچ میں ہم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً 20 سال چھوٹے تھے اور تقریباً ہمارے عمر کے لوگ تھے جو سی اسٹور چلا رہے تھے. hence we knew if something happened we immediately knew oh my goodness ہمارے وہ دوست چلے گئے اور ہمارے وہ دوست چلے گئے, یہ ہو گیا. اب چونکہ ہمارے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کے لوگ تقریباً جہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں سب تقریباً ریٹائرڈ ہیں یا وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو کہ یہ خطرے والا کام ہے, تو ہمیں کم پتہ چلتا. بٹ دس کیپس ہیپننگ ایوری ڈے, اس لیے کہ ہمارے لوگوں کا 20 سی اسٹور بہت سارے ہیں اور ان سی اسٹور میں یہ مسئلے ہوتے ہی رہتے ہیں. یہ ہے کہ وہ ینگ لوگ آج کل وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں, امپلائیز وغیرہ, اینڈ ہینس وی ڈو ناٹ نو آل دیٹ مچ کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ دس از بیکاز آف دی پاورٹی, بیسیکلی پاورٹی, انیکوالٹی, and that is all the sequelae of slavery and segregation and racism. تو یہ مسئلے ہیں unfortunately یہ چلتے ہی رہیں گے. اس کو جب تک بہتر نہیں کریں گے, جب تک اس کا کوئی صحیح والا علاج نہیں ہوگا, removal of all these reasons آہستہ آہستہ چلے گا. But some of the things will have to be done very quickly because such injustice and equality cannot last and should not last, because the injustice will keep on happening and it should be stopped absolutely immediately. Thank you very much. اور اگر اس میں ڈسکس کرنا چاہیں خان صاحب تو پلیز گو ہیڈ. آپ پوچھ لیجیے اگر کوئی سوال وغیرہ ہے کسی کا. 194 اوکے اوکے. السلام علیکم. I think one of the problems with these convenience stores is that when they are closing shop, they have a lot of money with them, and most of the people know about that because they have the cash and they are taking it home. But then there are some senseless murders. One of my close relatives, a couple of years ago, he got murdered when he was opening the store. But I think poverty, like Dr. Charania says, is really an economy, and we have to be careful even in our homes. Because
least, people are going to come to your home and help you. So I think this is a very big major issue besides all the racism and Dr. Charania mentioned. But convenience stores are always a target, and it's been going on like this for a long, long time. Thank you. Thank you, Dr. Charania. People who are not talking, if you want, you would mute yourself rather than me muting you. अच्छा ये एक नज़्म है, इसका उन्वान है मौलवी साहब जन्नत में। आवाज आ रही है, वीडियो नजर आ रहा है? जी। नहीं हो सकता है, उसके बाद क्या होगा वो मुलाहिजा फरमाइए। सब वारिदे जन्नत हुए जब मौलवी अब्दुल वदूद, मुस्तकिल पढ़ते हुए चिल्ला के सलवातो दुरूद, एक निगाहे ताहिराना डालकर सब पर बजूद, बोले कुछ इस्लाम का खतरे में लगता है वजूद। और मेरी नजरों को तो ये माहौल कुछ भाता नहीं, कैसी जन्नत है कोई अपना नजर आता नहीं। मेरी नजरों को तो ये माहौल कुछ भाता नहीं, कैसी जन्नत है कोई अपना नजर आता नहीं। तो दो कदम आगे बढ़े तो हूर एक आई नजर, हुस्न की हर दुनियावी तारीफ से थी बालातर, उससे बोले कौन हो तुम और बुर्का है किधर। उससे बोले कौन हो तुम और बुर्का है किधर, किस जगह रहती हो शायद पास ही हो मेरा घर। और हो अभी नाकत खुदा या बस गई दिल शाद हो, मैं अभी आया हूँ सेट हो लूं तो घर आबाद हो। मैं अभी आया हूँ सेट हो लूं तो घर आबाद हो। तो सब सट पटा कर हूर भागी सुन के ये टेढ़े सवाल, और लग रहा था पा गई है आपका हुस्न ख्याल। और ये बड़े अल्लाह को मालूम है सब दिल का हाल, खातिरे वहशी न हो जाए कहीं जां का वबाल। और जाने क्यों जन्नत का सौदा था और अक्सर था मुझे, हुजरे मस्जिद में भी सब कुछ मयस्सर था मुझे। हुजरे मस्जिद में भी सब कुछ मयस्सर था मुझे। तब फिर ख्याल आया कोई मस्जिद नहीं आई नजर, क्या यहाँ अल्लाह का अपना नहीं है कोई घर। क्या यहाँ अल्लाह का अपना नहीं है कोई घर। और दी सदा हक ने दिले इंसान है मेरा मुस्तकर, और सब महवे इबादत हैं बअंदाज़े दिगर। तो पूछा या रब कितने फ़िक़्हे कितने आलिम हैं यहाँ, मेरे मसलक पर हैं या सब गैर मुस्लिम हैं यहाँ। फिर ख्याल आया कोई मस्जिद नहीं आई नजर,
کیا یہاں اللہ کا اپنا نہیں ہے کوئی گھر؟ دی صدا حق نے دل انسان ہے میرا مستقر، اور سب محو عبادت ہیں بانداز دیگر۔ تو بولے یا رب کتنے فقہ کتنے عالم ہیں یہاں، میرے مسلک پر ہیں یا سب غیر مسلم ہیں یہاں؟ سب سن کے یہ مولا سن کے یہ سب ان کی باتیں دیکھ کر یہ ان کے گن، حور ایک یوں دوسری کے کان میں بولی کہ سن، حور ایک یوں دوسری کے کان میں بولی کہ سن، منحنی سے قد پہ یہ ہنگامہ آرائی کی دھن، منحنی سے قد پہ یہ ہنگامہ آرائی کی دھن، ہے مجسم مانیے کلو قلیل فتنتن، ہے مجسم مانیے کلو قلیل فتنتن، تو آدمی لگتے نہیں مجموعہ جنات ہیں، بولتے سنیے تو انا انکر الاصوات ہیں۔ صاحب یہ آخری بند ہے کہ ان کے مذہب میں نہیں تھی کیا دل آزاری حرام، اور کون سے مذہب کو یہ اسلام کا دیتے تھے نام، اور نام پر اللہ کے مروایا سب کو صبح و شام، خود نہیں حاصل کیا لیکن شہادت کا مقام، خود نہیں حاصل کیا لیکن شہادت کا مقام، اور مجھ کو ڈر ہے حور و غلما سب کو لڑوائیں گے یہ، مجھ کو ڈر ہے حور و غلما سب کو لڑوائیں گے یہ، اور یہاں بھی اب ذاتی نظام مصطفیٰ لائیں گے یہ۔ اچھا بھائی، یہ ذرا آپ لوگ اگر کسی تھینک یو Continue, Dr. Khan. جی اچھا بھائی، میں ایک یہ آئی ہوپ کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے آج کل پتہ نہیں کہ آپ کو جو ہے خبر ہے یا بھائی، یہ کون صاحب بول رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ میں Go ahead, Dr. Khan. I've muted them. اوکے، آپ کا ایک آپ کو تو شاید شوق نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے گرینڈ چلڈرن کو کچھ شوق ہو کچھ سائنس وغیرہ کے بارے میں، سمجھا؟ تو آج کل جو ہے ایک کامٹ گزر رہا ہے ہمارے بستی میں، وزٹر ہے اور باہر سے آ رہا ہے۔ کامٹس جو ہیں وہ سولر سسٹم میں آتے ہیں اور اپنے چلے جاتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ یعنی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے اصل میں کہ ہم لوگ یہاں ایسے رہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے آس پاس کچھ نہیں ہے۔ Asteroids and comets, they have been coming and they will be going. There was one comet in about 90s, you may remember, that was Hale-Bopp, I think. اور اس کو جو ہے وہ ہمارے یہاں تو نہیں، لیکن یہ کہ کافی دن جو ہے وہ اس کا جب وہ سیٹرن میں وہ پھٹا تھا، so that was observed.
I just wanted to take a minute or two so that I can show you a few things and I will not bother you after that. ये जो है, for example, this is, let me see, ये comet जो है इसका नाम है Neowise और ये टेक्सास में ये नजर आया था, समझा, अभी कोई 4-5 दिन पहले, समझा। ये टेक्सास का माहौल है बिग बैंड, आप भी स्टेट पार्क बिग बैंड में गए हैं, बड़ी अच्छी जगह है लेकिन बिल्कुल वीरानी भी है। तो ये बहरहाल ये कामेट चंद दिन पहले आया था। कामेट जो है वो they are like cats, they have tails, you see, and when they come closer to the sun, they heat up and they blow off all kinds of material, and that's how they get the spectacular tail. Is comet की जो tail है, what happened? Is comet, please end the screen share. क्या हुआ? क्या? You need to share your screen again, Dr. Khan. ये क्या हुआ था? Okay, let me see. Okay, let me see if I can find it. Okay, is it now? Yes, sharing? now we can see Okay, Comet yeah. Neowise. Anyway, so ये जो है बहरहाल इसकी tail जो है, just for your information, it is 1.25 million miles लंबी है, ठीक है? Okay, और ये जो है anyway, Dr. Khan, press the share button. There's a button on your screen called share. Press share. Yeah, share तो है. You need to press it with your mouse. Is it now? Is sharing or now? Okay, now it's okay. Okay. Go ahead. Okay. अब ये जैसे कि इसको जो सबसे पहले नोट किया था वो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो तकरीबन 250 मील ऊपर अर्थ के जो है ये रोटेट कर रहा है 24 आवर्स अ डे, यू ऑल नो दैट। तो उसमें से उन्होंने नोट किया था और उसकी ये तस्वीर एक ये जो बॉब बेनकेन है, एस्ट्रोनॉमर, आई मीन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, उसमें है, एस्ट्रोनॉट उसमें है स्टेशन में, उसने लेकर ये देखिए ये हमारी जमीन है, ये अर्थ है और ये जो है ये स्पेस है, और ये स्पेस में ये थोड़ा सारा जो नजर आ रहा है आपको, ये वो कामेट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कि 22 जुलाई को that will come nearest to us and that will be about 64 million miles. तो हमें कोई डर नहीं है कि इसमें कोई खराबी हो सकती है। ये जो है ये चंद दिन पहले 8 जुलाई को जो है ये लेबनान के ऊपर रिकॉर्ड हुआ था, समझे आप। So it is still going on, and the comets, they really are often described as dirty snowballs. They are made of rock, dust, gases, and so on. So that's where it is. They are a combination that doesn't always hold together. They are in a loose condition. और जब सूरज के करीब आते हैं उसकी गर्मी से जो है वो उनमें टूट जाते हैं, and they sometime extreme temperature में ये हो जाता है. I just wanted to share this with you, and I hope that you will talk to your children or grandchildren about it. Okay. Okay. How can I get out of here? Okay, escape. Okay. 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 Oh my goodness. एक चीज मैं और आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप लोग जो हैं अक्सरियत जो है क्या ये ओके, आप लोग अक्सरियत आप में ऐसी है कि जो आप टर्की को हो आए हैं और टर्की की हिस्ट्री आपको मालूम है, ब्लू मास्क आपने देखी है। ब्लू मास्क के करीब ही अगर आप वहाँ इस्तांबुल में गए थे तो हाजिया सोफिया था, जो कि आपने बड़ा ही
मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है, डोम उसका बड़ा अच्छा है, सब कुछ है। और काफ़ी दिनों से हुकूमत जो है, ख़ास तौर से अर्दोगान की हुकूमत जो है, वो कोशिश ये कर रही थी कि इस म्यूज़ियम को जो पहले कैथीड्रल था, इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। और जुमे के रोज़ वहाँ की जो अदालत है उसने इनको फैसला दे दिया कि भाई आप कर लीजिए, समझे। तो अब जो है अर्दोगान भाई ने, उनके जो हुकूमत ने ऐलान किया है कि 24 जुलाई को ऑफिशियली मस्जिद कन्वर्ट हो जाएगी। आई मीन ये हाजिया सोफिया जो है ये मस्जिद बन जाएगी। और बहरहाल ये आप देख रहे हैं कि ये जो मीनार है, मिनारेट्स, 4 शायद मीनार हैं इसके ऊपर। सबसे पहली तो बात यह है कि हाजिया सोफिया जो है उस जमाने में जब ये कॉन्स्टेंटिनोपल था, तकरीबन 1500 साल पहले, तो ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कैथीड्रल बना था। ये आपके जो है उसके अंदर आपने देखी होंगी तस्वीरें, या उसको व्हाइट वॉश किया हुआ था तो शायद आप न देख सके हों। लेकिन यह है कि 1500 साल पहले 537 में इसको बनाया था एम्परर जस्टिनियन ने, समझे आप। और उसके बाद जो है आप ये समझ 6th सेंचुरी से 15वीं सेंचुरी तक, 1453 तक, ये दुनिया का सबसे बड़ा कैथीड्रल रहा था, समझे। इसका गुंबद इतना बड़ा, the world's largest and beautiful cathedral was converted into a mosque after Ottoman conquest in 1453। जब वो क्या नाम था, मोहम्मद सुलेमान या वो जो थे, तो उन्होंने पहले जाके यहाँ पर नमाज पढ़ी थी। और नमाज पढ़ने के बाद जो है, चूंकि ये जो है बादशाहों के लिए ये कैथीड्रल था, एनीवे इतना ग्लोरीफाइड, तो उन्होंने इसको मस्जिद उनके दौर में बन गई थी। तो ये आप देखिए, ये मेहराब, यहाँ पर अल्लाह, मोहम्मद, अबू बकर और उस्मान, अली वगैरह, ये सब कुछ ये उस जमाने के हैं, समझे आप। लेकिन फिर हुआ ये कि कमाल अतातुर्क का जब कब्जा हुआ, पहली तो ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में खिलाफत जो है, उस्मानिया खिलाफत तबाह हो गई। और बिल्कुल सऊदी पे, दुनिया भर में जो उनकी हुकूमत थी सब। खुशकिस्मती से कमाल अतातुर्क जो है वो जनरल थे, और उन्होंने कुछ लड़ाई में कुछ कामयाबी हासिल की। उसकी वजह से जो आज का टर्की है वो फिर ये जो फोर्सेस थे उनके तहत उन्होंने उसको ले लिया। और फिर जब वो 1921 में उनका फुल कब्जा हुआ, तो उसके बाद जो है उन्होंने इस के उस्मानिया ने जो वहाँ पर अरबी रस्म था लिखने का, उसको ख़त्म किया। उसकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल रोमन कर दी, और मस्जिदों को काइंड ऑफ बंद कर दिया। नमाज वमाज पढ़ना इतना आसान नहीं था। और तो उन्होंने जो है फिर ये किया कि 1934 में इस हाजिया सोफिया को, कैथीड्रल जो मस्जिद हो गई थी, उसको उन्होंने एक म्यूजियम बना दिया। तो उस वक्त से अब तक जो है ये म्यूजियम रहा है। और हर साल मिलियंस जो विजिटर्स जाते हैं टर्की को, हम और आप भी गए हैं, तो वो आपने इसको देखा। ये जो इसके ऊपर जो मीनार हैं, ये सब माशाल्लाह से उस्मानियों ने बनाए थे। और आई एम श्योर कि मुसलमानों को बड़ी खुशी है, एक और मस्जिद का इजाफा हो गया, और बड़ी शानदार मस्जिद है। आपने ब्लू मास्क देखी होगी, जो कि बेहतरीन मस्जिद है, जो उस्मानिया खिलाफत के ज़माने में बनी थी। और बहुत सी मसाजिद हैं इस्तांबुल में। लेकिन अब इस वक्त ये भी हो रहा है कि दूसरे कुछ ईसाई वगैरह जो हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप वगैरह जो हैं, थोड़ा बहुत शिकायतें कर रहे हैं कि भाई ये आप जो है ये इसको ना कन्वर्ट करें मस्जिद के ऊपर। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस जो है, जिसमें तकरीबन 500 मिलियन क्रिश्चियंस मेंबर्स हैं,
उन्होंने भी अपील की थी टर्की को कि इसको न बनाए मस्जिद, because council feels grief and dismay. US Department was very disappointed. Our World Council of Churches said, by deciding to convert Hagia Sophia back to a mosque, you have reversed that positive sign of Turkey's openness and changed it to a sign of exclusion and division. Russian Orthodox, Eastern Orthodox, दुनिया भर के लोग जो हैं वो उसको कर रहे हैं, लेकिन ये कि मुसलमान जो हैं माशाल्लाह, they seem to be very happy. So I just wanted to bring to your attention, पता नहीं आफाक रानी इस महफिल में आज हैं या नहीं, उनके साथ और जमील चूनावाला, शाइस्ता और डॉक्टर और मिसेस पाशा के साथ और भी कुछ लोगों के साथ हम लोग गए थे। हमें भी ये खुशकिस्मती हुई थी कि हमने ये सब चीजें देखी थी। So I just wanted to share with you this news. आप इसको, कुछ लोग इसको glad tidings समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, but this is I just wanted to share with you. आप अगर बुरा न माने तो मैं आपको एक म्यूजिक सुनाना चाहता हूँ, आप इसको सुन लीजिए। ये है AR रहमान की का प्रेजेंटेशन कुन फयाकून। आपने शायद सुना हो, और अगर किसी ने नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए इसको, समझे? Fire
पे करम सरकार तेरा, अर्ज तुझे कर दे मुझे, मुझसे ही रिहा, अब मुझको भी हो दीदार मेरा, कर दे मुझे, मुझसे ही रिहा, मुझसे ही रिहा। हाँ भाई, ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। I don't know where I am. We heard most of it anyhow. Yeah, okay. I want to get back to that. Where is that? Yeah, this one. Okay, stop share for a minute. Okay, yeah, okay. Exit full screen. Okay. I hope that this was useful. Kun fayakun, it's a little bit longer, about 11 minutes and so. आप लोगों में से अगर किसी को कोई है, मैं एक दो चीज़ें आपसे बात करना चाहता हूँ जो कि हमारी जो है एजिंग सोसाइटी से मुताल्लिक है, समझा? So I want to talk about, this is done. So let me talk about this. I'm not quite sure कि ये जो है शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है. Can you see this slide? No, we see your desktop. Okay. You have to select whichever you want to show and Yeah, then press yeah, the share button also. I think Sometimes we select the screen you want to show, but you don't press the share button. Yeah, okay, let's see, where am I? Where am I? Here. Okay. Okay. Is it okay now? Yeah. Okay. Sorry about that. I'm learning at age 80 to be something like young people. Okay.
You're young for learning. Yeah. Our aging society and we. I thought we need to talk about that a little bit, and then we will have some discussion. Many, as I mentioned earlier, that some of those are lucky that are living with their children and their grandchildren. But there are also some women who are living alone. There are some men who are living alone. And so that is a critical issue. और पिछले चंद दिन पहले इनको आपको डॉक्टर हमीद कुरैशी को आपने देखा था कि उनकी मोहतरमा जो है उन्हें छोड़कर चली गई. उनका ऑर्डर आ गया था तो वो चली गई. कहा कि हमीद भाई की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. अचानक जो है, I mean, and I'm not exaggerating it, it's just he was lost. अच्छा, अब सवाल ये है कि अब वो फिर उसके दफनाने के दूसरे दिन उनके बेटे वहाँ मैकालन में रहते हैं, तो वो जो है उनको लेकर मैकालन चले गए हैं. अभी वहाँ से वो वापस नहीं आए हैं. लेकिन जब अब आएंगे तो अब सवाल ये है कि वो अपने महल में और क्या होगा. तो मैं एक चंद मिनट आपसे लेना चाहता हूँ. ये द प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग सोसाइटी. हम सब जो है कुछ खुशकिस्मत हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ नहीं हैं, लेकिन बेसिकली हमें जो है वो पेन एंड लोनलीनेस इन ओल्ड एज इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम. उसके बाद यह है कि किस तरह जो हम लोग एजेड हैं, किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड. आप सबको पता नहीं, पिछले 20 साल में तो मैं इतने जनाजों में गया हूँ कि अब मेरा ही जनाजा होने वाला है, इसलिए कि अब मेरी फैमिली में मुझसे बड़ा कोई नहीं मालूम होता पाकिस्तान में. यहाँ तो है ही नहीं. और भी बहुत से लोग उन्हीं सिचुएशंस में हैं और हम जो हैं वो एक तरह से अकेले होते जा रहे हैं. थोड़ी बहुत ये चंद दोस्त हैं गोल्डन क्लब के या सीनियर के, या वो अपने चलता रहता है. इसके अलावा कोई हमारी फिक्र नहीं करता. समझा. आपको मालूम है कि आजकल मस्जिदों में आपका जाना बंद हो गया है, इसलिए कि जो लोग 65 से ऊपर हैं उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है. तो एक थोड़ा बहुत जो वो मशगला आपका था वो भी खत्म हो गया है. समझा. So as the time goes on, some of us are getting back to the return state. Some of us are bedbound. Okay, and then everybody has to take care of it. So these are the issues. I'm not going to discuss them much, but the thing is that the road ahead will be rocky and it will be precarious. चाहे डॉक्टर के पास जाना हो or to go to the shopping, we will need somebody's help. Okay, so this is something that I wanted to bring to our attention, and so maybe we will at some point we'll talk a little bit more. अच्छा, अब आप ये देखिए कि आपके पता नहीं आपके पास फोन कॉल्स आती हैं या नहीं आती हैं. काफी जो swindlers और स्कैमर्स हैं, they want to get you part with your money. Okay, so this is nothing new. हर जगह होता है, पाकिस्तान इंडिया में भी होता है, यहाँ भी होता है. तो इसके लिए जरा एहतियात रखने की जरूरत है. समझा. मेरा सिर्फ यह है कि request you, मेरा अपना नहीं है, कहीं से मैंने पढ़ा था कि stay humble, don't act superior because of old age and knowledge or even of your money. इसलिए कि जब आप अपना काम खुद नहीं कर सकते, ड्राइविंग मुश्किल हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वो खान साहिबी जो है, जो एक ज़माने की थी, चाहे वो की हो या पैसे की हो, ज़रा उसको हम्बल रखिए. समझे आप. समथिंग लाइक. अब हमने दुनिया भर की चीज़ें जमा की हुई हैं, किताबें हैं, ये है, वो है, कालीनें हैं, किसी चीज़ की जगह नहीं है. So we need to start thinking about it, what to do with that. Anyway, अब जाके जब खाक में मिल गए या मिलेंगे, so that is the real way. The way of nature is our way of life. Okay, so I hope that you are not very bored with all of this.
and so we will inshallah do something else. इसके बाद मैं ये चाहता ये हूँ कि अगर आप लोग इजाजत दें तो हम जो है थोड़ा ये क्या हो रहा है? Where is my screen? Okay, let me just stop sharing. Yeah, okay, ठीक है. Okay. हाँ भाई, आप 1-2 मिनट अगर कुछ कहना चाहें तो ठीक है, वरना इसके बाद जो है हमारा प्लान ये है कि हमने तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, 1 घंटा 10 मिनट हो गए हैं, और हमने कोई बात नहीं की है जो असल मसला है, और असल मसला है कोरोना वायरस, जो आजकल अमेरिका में ज़रा ज़्यादा हो रहा है, ख़ास तौर से ह्यूस्टन में, फ्लोरिडा में, सब जगह जो है बढ़ रही है, और ह्यूस्टन के कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो ये बाकी जो 10 मिनट हैं, मैं ये चाह रहा था कि इसके ऊपर कुछ बातचीत हो जाए, और उसके बाद जो है, चूँकि ज़्यादातर हम लोग जो हैं घरों में बंद हैं, दोस्तों के पास नहीं जा सकते, कुछ लोग जो हैं ग्रैंड चिल्ड्रन को भी नहीं देख पा रहे हैं, सब कुछ है, तो इसकी वजह से बाज़ लोगों को टेंशन सा होने लगा है अकेले रहते हुए। तो मैंने डॉक्टर मनाजिर शमसी से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस सिलसिले में कुछ बात करें। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान काफ़ी लोग जो हैं बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, डॉक्टर पाशा हैं और भी लोग हैं। अब यह है कि डॉक्टर पाशा जो हैं वो अपने बहुत से आईसीक में और सब चीज़ों में खिदमतों में लगे रहते हैं, and I'm sure that he in this. So I talked to Dr. Manazir Shamsi to talk on the depression. He kept his barge in his office. Great, not yet. He stood with his mind. The city budget went to the bone. Talbot came through for this department. I'm not saying don't investigate. ये कौन है भाई? इनको बंद कर दें हसन भाई. Okay. जाहिर भाई, मीटिंग एडजर्न करने से पहले 1 मिनट मुझे भी दे दीजिएगा. जरूर जरूर, चलिए आप ही ले लीजिए. बहुत शुक्रिया. बताइए जी, बताइए क्या कह रहे हैं. अच्छा जी, एक्सक्यूज मी. एक तो आपको अंदाजा है कि इस ट्यूसडे को इलेक्शन है, जो अर्ली वोटिंग तो खत्म हो गई रन ऑफ की, और रन ऑफ स्टेट ऑफ टेक्सास की प्राइमरी का हो रहा है इस ट्यूसडे को. तो हम में से जो वोटर हैं और अर्ली वोटिंग में वो किसी वजह से वोट नहीं डाल सके, तो ट्यूसडे का ऑप्शन है उनके पास, वोट जरूर डालिए. और एक तो हम लोग कंपेन चला थे गेट आउट द वोट, एक है गेट आउट द काउंट. अभी तक स्टेट ऑफ टेक्सास बहुत पीछे है. थ्रू आउट द 50 स्टेट्स हम लोगों का 40वां नंबर है. हम लोगों के 60% से ऊपर हम लोगों ने अपना सेंसस भर के भेज दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने अभी तक भी नहीं भेजा. तो मैं घर से गुजारिश करूंगा कि जिन जिन लोगों ने अभी तक सेंसस के फॉर्म नहीं भरे, प्लीज सेंसस के फॉर्म भरिए, अदरवाइज स्टेट ऑफ टेक्सास जो है बहुत से फंड से महरूम हो जाएगी. और अजराय तफर ने एक और बात मज़ार साहब से करता चलाऊं, पिछले 10 सालों से ज्यादा अरसा हुआ है कि हम लोग हर मीटिंग पे हमें लंच मिलता था, और आज जो आपने लंच की डिलीवरी भिजवाई है वो सिर्फ एक दरवाजा उसने जाके नॉक किया है, और बाकी हम लोग दरवाजे की तरफ देख रहे हैं कि डिलीवरी कब आएगी हमारे खाने की. बहुत शुक्रिया. अब्दुल रऊफ खान, बहुत बहुत शुक्रिया. आप सब लंच भी मिल जाएगा इंशाल्लाह. तो भाई अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं डायमंड भाई से कहूँगा कि ज़रा हमें कुछ वो स्टैटिस्टिक्स बता दें. माशाल्लाह से इंडिया पाकिस्तान में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम लोग वहाँ मरे हैं, लेकिन ये कि यूनाइटेड स्टेट्स में 138,000 मर चुके हैं, 3 मिलियन से ज़्यादा परेशान हैं. तो ये ज़रा उनकी स्लाइड्स बताएंगे आपको, so that will be great. I was with the Senate. But understand, I'm a married man. I hold public office. हाँ भाई, क्या बात है डायमंड?
डायमंड आपकी आवाज नहीं आ रही है. Okay, I'm sorry. I was muted. Okay, I'm okay now? Yeah, yes, I can All hear right. you. So we have worldwide close to 13 million cases. If you just follow my cursor, I'll walk you through it. Close to 13 million cases. Worldwide, we have had close to 570,000 deaths here. So now we're going to move down and look at the countries case by case. But before I do that, I wanted to show you this graph here, which is the daily new cases. So if you look at this graph, it's going up very, very rapidly. We are looking at worldwide something like about 225,000 cases daily. And this is not, it's on an increasing trend. Every day it's more than 200,000 people. So worldwide it's not being contained. The deaths are pretty well roundabout steady here, daily deaths. But it looks like the coronavirus is probably more infective rather than fatal. So that's my conjecture. So let's move on. And the next thing that we're talking about is country by country. So here we're looking at the country here on the first column. Then we're looking at the total cases and the new cases that have come up and total deaths and new deaths. United States is pretty well up there with 61,000 cases. Then we have Brazil, 1.8 million. India is coming up very, very rapidly at 850,000 cases. The thing to notice here is that we have here, if you look at this column, the cases per million population. United States has got about 10,000 cases per million population. Brazil is high. India is also coming up very rapidly. And that's really the message here, that it is not contained. It is spreading rapidly. Florida has, for example, overtaken New York as the largest number of cases per day. So the three states, Florida, Texas, and Arizona, these are the ones that are really leading the nation right now. So ehtiyatan is what's recommended. Over to you, Manazir Sahib. अब इसमें जो है ये अभी जो ये स्लाइड लगी हुई है ये 61,719 within the last 24 hours. Yes, it says yesterday. Yes, yeah. So ये ठीक है और एक दिन में जो डेथ्स हुई हैं यहाँ पर 731 है. It doesn't matter कि इंडिया में कितनी हुई हैं या वहाँ पर जो है टोटल डेथ्स 22,000 हैं. I mean, that is not of our concern. We are living here, and also, you know, other places we don't know. But Brazil is really number 2, and so we need to be careful in here. If you have any remarks, if you want any question, please do so before I go and request Dr. Manazir Shamsi to give his talk. If anybody has any comment. Dr. Saab, somebody sent me a tidbit that the country which has managed to control the coronavirus, all countries are led by women. Yes. So you should listen to They your had wife. the lowest statistics. It's very, so we know who we should be listening to. Over to you, that's all. Listen to the wives. Listen to the wives, okay. So I think one of the important thing that comes out that is coming out lately is that it is not only the lung disease. The virus is not necessarily only affecting the lungs. It is affecting the vascular system, and hence a lot of other things that we are seeing, like neurological, heart, and embolism and thrombosis. That is causing a lot of different complications. In fact, जिनको बहुत ही कम symptoms या almost asymptomatic कोरोना हुआ है, वो भी पिछले 1.5, 2 महीने, 3 महीने से जब से ये शुरू हुआ है, जिनको पहले हुआ है, वो भी अभी तक they are in a situation that they have got lots of other symptoms, which is should be totally unrelated to the disease. But that is now. आज सुबह को मैं सुन रहा था बेंगलोर से कोई मोहतरमा थी बोल रही थी डॉक्टर जो एपिडेमियोलॉजिस्ट उनकी है. She was on BBC and she was talking about the same thing. I think we need to really still wait and see, and lots of other things are coming out. Thank you. And I think there's also some reports about immune system being suppressed as a result of that. Tom Hanks is an example. He got it in March, but his immune system is quite low right now. Dr. Manazir. For my But we're still on the subject. I would just like to tell you that, you know, the Texas Medical Association has
sent a table or a graph which tells you what are the high risk. And I'll tell you just a few that is important for us, but some of them are not so relevant to us. Like from a scale from 1 to 10, 8 is eating at a buffet. 7 is attending a wedding or a funeral, or going to a hair salon or barber shop. So that is number 7. Then number 6, from a scale of 1 to 10, number 6 is visiting an elderly relative or friend in their home. Number 5, shopping at a mall. Number 5, again, attending a backyard barbecue or having dinner at someone else's house is number 5. Then on a lower scale, number 4 is if you eat in a restaurant outside is 4. Sitting in a doctor's waiting room is 4. Playing golf, staying at a hotel for 2 nights is 4. I was surprised at that. Grocery shopping, 3. Going for a walk with other people is 3. Pumping gasoline is 2. Getting restaurant food takeout is 2. And opening the mail is 1. Oh, really? So these are some of the things, if you believe in it, and you know, it's up to you whether you believe in it or not, but going to a restaurant is not something you want to do. If you're outside, which you cannot do because of the heat, is 4. But if you're going to sit inside, then the scale goes up. So these are some of the things that you have to be aware of. Like opening the mail is number 1. So that's the only one that, you know, is the safest. The rest is, you know, risk. Even walking at other people is a risk. But visiting elderly, going to a funeral is number 7. I thought that was pretty high. Then I think it is definitely believable, and not only believable. I think जो हम normally सुनते थे ना, survival of the fittest की बात. I think survival of the smartest की बात है. Be very smart. Make sure that you are smart enough. For example, ये Zoom meeting है. I hope कि 0 - 5 होगी हमारे पास. Okay. Okay. So, just a few other things that I want to tell you is this is important for me to let women know driving is an issue. If your husband is sick, you should know how to drive. Some of the women refuse to learn how to drive, and some of the men do not encourage the women to drive. Too late now. And at this time, I don't think it's too late, Pasha. I still think, and I told my brother also, they are not here yet. I said, you have to tell your wife to learn driving. This may be a sensitive subject, but it is. The other thing is CPR. You mentioned about Dr. Hameed Quraishi. Mm-hmm. You just panicked. But you know, we cannot put ourselves in his place. But I do know that CPR may be important. At the time, you don't know, what you're going to do. But having the knowledge is important. The other thing about scam, you said, do not open the door for any reason unless you know who that person is. I had an experience the other day. That guy came, young guy with a badge and all. He just went on ringing the doorbell, and then he would knock at the door. I did not open the door. He came back two hours later. He didn't have a car. He didn't have a van. He had a badge. And then I saw him walking away. So I don't know who he was, but the fact is that it is a little dangerous to open the door. Then you mentioned about, the books that you have. So start downsizing now if you haven't done it yet. Because now you're at home. There are, times you have more time than before. Start downsizing because you will be amazed how many things you have that you really don't need. Just throw it away. And Isna and Ikna, I think they are going to come to the door. I gave away so many clothes. I was ashamed of the fact that I had so many clothes to give away. And then they will take your household items too. So anything you don't want, and I'm sure everybody will relate to the fact that we have so much stuff that we really don't need. And the way things are now, even the clothes that are good clothes, when will you wear it? I don't know. I've got some clothes that I've not worn at all. So women should know the fact that, get rid of your old clothes. But that's all I have to say. But these are important things that for me, these are important items. Thank you. Thank you, Dr. Noor Pasha. You are right. Especially पिछले चंद महीने में जब हम घरों पर रह रहे हैं, तो actually एक
मर्दों के लिए भी ये है, औरतों का तो खैर है, आपको तो मौका ही नहीं जानने का, लेकिन हमारा भी ये है एक एक जो है वो कई एक पूरे हफ्ते चल जाता. There is no need. Anyway, thank you very much. Thank you for pointing. It is about 2:30. So may jo hai, I will request Dr. Manazir Shamsi to please talk to us about the depression. As all of you do know, that Dr. Manazir Shamsi is on the clinical faculty of Baylor College of Medicine and also UT Medical School. और जो अब नया यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन का बन रहा है मेडिकल स्कूल, attached with them. But anyway, he is going to give us some hints, and then maybe Pasha and other people can talk about it. Thank you very much. हाँ भाई, बताइए कहाँ हैं आप? जनाब, शुक्रिया जनाब इनायत. मेरे लिए बायसे अफजाई है. It is really an honor that you asked me to talk on this topic, and you gave me up to 15 minutes, and so I just started my timer. Okay. Okay. Now we have 29 persons participants. We had up to 31 or 32. So सबको अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आदाब. आप जानते हैं मेरी टॉक ऐसे ही होती है, जरा कुछ ह्यूमर होती है, कुछ लाइट होती है. So today we are going to discuss the topic Dr. Mazahir Khan allotted was depression that some seniors may feel due to COVID-19 lockdown. So, all right, this is a very serious topic. And just now we were talking about so many deaths all over the world, statistics. TMA, what says every day, I also get the TMA letter, AP letter, different letters. So emails. So all this we talked about. We also talked about old age, loneliness, Dr. Hameed Quraishi, all those things, very depressing to me. And also, now we are going to talk about COVID-19 and isolation. All right. So ये सब हो रही है सब कुछ. So what I'm going to say now, actually all of you know about it. Just like we discussed now, and on TV, we watch horrifying news. We read information on social media, Facebook, also messages sent to us, forwarded to us by other people on WhatsApp, usually taken from YouTube. So you all know all about this. But we seniors, because we are older people, continuously think and fear about impact of lockdown on us. Actually, this is natural process. Continued fear causes anxiety and depression. Always, if there is some fear, there will be first anxiety, later on changes to depression if fear continues. Yes, what happens, degree of reaction may be different among us. How somebody responds, how I respond, how Dr. Mazahir responds, how Dr. Yasin Pasha, Barkat Charania, other people here, Zakia Babi, how she responds, all the people. So this may be different how we respond. This is very important, how we respond. Anxiety means fear of unknown. We don't know what is going to happen. And depression means we feel hopeless, helpless. You know that also. Now I'm going to quote what I read this month in newsletters of Texas Medical Association, American Psychiatric Association, National Institute of Mental Health, and American Medical Association about emotional effects of COVID-19 on seniors. These were the wordings, emotional effects of COVID-19 on seniors. So I'm talking about seniors, not general population. They said there are two major stressors. Overconsumption of alarming stories related to virus. Watching news about, and this is true what I'm quoting from them, about storing dead bodies in the refrigerated trucks. You have seen them. Cannot attend the funerals. Loss of job, closing schools,
not having gathering in funerals, all those things are going on. Shortage of supplies, scenes of ICU, what is happening in hospital, and all other horror stories. Very, very depressing. This is going on. I'm sorry, I just this computer acted. No, that's okay. All this going on, these horrible things. So now, isolation. Second stressor. So first stressor, these horrific stories on news, all those things, reading about it, listening to that and watching all that. And then a second stressor is our, that is going on is isolation. Just like Dr. Mazhar Khan mentioned about loneliness and isolation. Because we cannot spend time with our support system, just like it was mentioned. Our family, friends, we could not attend Golden Club meetings with lunch. It's like lunch was mentioned just now. So these things, people get isolated. But thanks to Dr. Mazhar Khan, that these Golden Club meetings are being held and we are socializing. Also thanks to Dr. Jassim Pasha and of course Dr. Barkat Charania, other people who hold that IC meetings the same way. So thanks to all the people. I will mention, I mentioned it once before also, thanks to Babi Khan also. Actually, they are talking about a spouse, and a spouse sometimes has to give sacrifice so that the other spouse, like husband in this case, could give time to us. We borrow from her, so thank you, Mom. So due to the alarming news and extended periods of loneliness, those two stressors, some seniors, and this is again, I am quoting the wording from National Institute of Mental Health. Some seniors get threatened. They get actually trapped in thought patterns of fear. So fear is the thing that we get trapped. What is going to happen? How is it going to happen? I'm going to die. Who will give me resuscitation? What will happen? All those things. Who will drive me? Who will drive me? All those things. So let us talk about how to cope with situation when we tell ourselves this situation is causing anxiety or depression. I said when we tell ourselves, this is true. Our thinking is very important. When we think that way, then things look different. Everybody thinks differently. Anyway, now I wrote down some points so you can see I'm turning the pages. Now remember 3 key words which I used: loneliness, anxiety, and depression caused by lockdown. Now solution, what is the solution? What is the treatment? In any difficult situation, we all use our typical coping strategy. We all use. Any stressor, anything happens to us, any incidents, something comes across, whether it's financial, any other adjustment problem, dispute, we use our typical coping strategy. What it is? We think first, analyze, and increase our resilience, which means our mental and emotional strength to face the situation. In every case, this happens. It doesn't matter what is happening. I'm sorry, I'm going to say something different. It doesn't matter what is going to happen to India, Pakistan, here. Of course, people are dying, no doubt. As a human being and humanist, we should all think about it, no doubt. It's not going to affect me. I should take care of, as just like Dr. Noor Pasha said, those things, using mask and keeping away all those things. So first, dealing with loneliness. About a year ago, I remember very well, Dr. Mazhar Khan, Mazhar Bhai, leader, in one of our meetings, explained the difference between being alone and loneliness. He used the word, I still remember, Gosha Nashini. And this is true. The difference between alone or having loneliness or Gosha Nashini. It is up to us not to be alone. So even if we are alone, we don't have to be lonely. And he said very well that I remember it was about 9 or 10 months ago. So what we can do? We can pick up the phone. Yes, pick up the phone and have a video call. And call the person and say, call me. Manazir भाई, आज तो बड़ी अच्छी आपने चेक शर्ट्स पहुंची, मुझे आप याद आ रहे थे, आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, आपने ये किया वो किया, क्या हुआ? अब मैंने वो किया जो कि डॉक्टर पाशा अपने आईसीक में
हम लोग को सिखाते हैं। पहली बात तो ये ग्रेटिट्यूड शेयर, हमने कहा कि भाई आप मुझे याद आते हैं, हमेशा ये करते हैं वो करते हैं। दूसरी बात ये एक्सप्रेशन ऑफ लव अफेक्शन मैंने दी, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उससे क्या हुआ, मैं भी खुश हुआ, वो शख्स भी, मेरा चेहरा भी देखा, फेस पे बात हुई, बातें हुई, तो इससे बहुत अफेक्शन क्लोजनेस आ जाती है, हम इतने लोनली नहीं। हाँ, हो सकता है कुछ सीनियर्स के पास वो फ़ोन ना हो जो भी मैंने आपको दिखाया, तो उसका और तरीका भी है। कुछ लोगों के पास ये फ्लिप फ़ोन होता है, इसको यूज़ कर लीजिए। आप समझेंगे मैं ड्रामा कर रहा हूँ, लेकिन इससे आपको याद रहेगा देखने से मैंने क्या कहा। फ्लिप फ़ोन नहीं है, एक और फ़ोन भी होता है जो लैंडलाइन कहलाता है, और ये होता है साहब, कार्डेड हो कार्डलेस हो, ये फ़ोन यूज़ कर लें। हाँ, इसमें मैसेज नहीं भेज पाएंगे, ये नहीं कह सकते उससे कि भाई कि जो याद आ रहे हो मैसेज में आई लव यू, ये सब एंड में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बात हो सकती है, कांटेक्ट में रहेंगे। और हकीकत में हम सब लोग ज़्यादा कांटेक्ट में हैं दूसरे लोगों के अब, जबकि हम अकेले हैं और हमें चांस मिल रहा है लोगों को कॉल करने का, बात करने का। इस तरह से अभी हम लोग हैं 31, 32 यहाँ पर मौजूद हैं, एक वक्त में सबको देख रहे हैं, सबको बातें करना सुन रहे हैं, सबके ख्यालात सुन रहे हैं एक वक्त में। असली मीटिंग में क्या होता था कि भाई एक शख्स बोलता था, सब सुन रहे हैं, फिर दूसरा कभी बोला, क्या हुआ। यहाँ बहुत क्विक इंटरेक्शन हो रहा है हमारे एसएलई साहब की बदौलत। तो ये सब, तो हमने क्या किया, लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए अपना इस फ़ोन का इस्तेमाल किया ना। सो हमारी पहली प्रॉब्लम थी लोनलीनेस। अब क्या हुआ, उससे जो हमारा डिप्रेशन होता है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, I should not think. On the media, I heard that 2 physicians attempted suicide or killed themselves because of attending those cases of coronavirus. I did not hear what problem they had before. They had some mental problems, other problems, adjustment problems, personality problems, someone had. Not everybody is killing them herself and himself. Or we see that people have been depressed. We read all the news. I have not been depressed. Why should I be depressed? Let them be depressed. वो अपने घर कम रोटी खाएं, डिप्रेस हो, मैं तो नहीं करने, मैं क्यों डिप्रेस हूँ। तो हमारी थिंकिंग, फिर मैं उसी बात पर आऊँ, थिंकिंग पे बहुत इम्पोर्टेंट है, हम किस तरह से सोचते हैं इसके बारे में। So we should spend less time on scary news. And if there is news, it is coming. Suppose they start, I see usually 5 o'clock channel news, I mean local news. They start with, this was mentioned, robbery at some store, this was mentioned. Somebody was killed, rape, murder, gun, and then statistics about coronavirus, all that. What we can do? We have a control on that. What we watch, what we don't watch. I don't want to watch everything, every time, all that going on the TV, which doesn't help me. Why should I watch? Why should I waste my time in that? Instead of that, I should call somebody, talk to that person. So what I can do, we have a remote, very powerful thing. It's so powerful, and sometimes change the channel immediately. Go back to channel after 5, 6, 10 minutes. So we can do that at remote, in the house, to see which channel. Sometimes there is an argument between husband and wife, or our children, it happens. So they want different. So we can do things ourselves, thinking and control our actions and behavior. Now research shows, and this is again, I'm speaking from, I'm quoting. Research shows that we had several times presentation in our, I'm sorry, I said research shows, and about that research, also we had several times presentation in our Golden Club meeting. I remember Dr. Noor Pasha, Dr. Fatma Said mentioned several times, other people also mentioned that what? Sleep, regular meals, staying hydrated, drinking plenty of water. Once we have one lecture on that, the drink distilled water, but main purpose was to say that we should drink water, enough water. And of course, breathing exercises, as in yoga. Of course, a breathing exercise also helps in our
with COVID-19 also, because of the lungs that we take a deep breath and then exhale slowly. So everything from the bottom of the base of the lungs also goes up. Anyway, so we do all those things. Sorry, my timer went off. I will make it very quick. Good. So my 13 minutes are over. I have 2 minutes more left. I will complete that. So these are called adjunctive therapies. So we do that also. Now treatment of depression. 2 treatments. And you all know that also, what I'm saying again. Psychotherapy is one, and second is medications. Psychotherapy or talk therapy is very effective treatment for depression caused by any outside factors. It helps us by teaching new ways of thinking and behaving. Again, I came back on thinking and behaving and action, and changing our habits, our responses to cause of depression. Everybody responds a different way, but we can change our thinking, our response to depression if we think there is some depression. In any way, whether it is due to lockdown or not due to lockdown. Psychotherapy can help us to understand and work through difficult situations. Any, of course, lockdown too. It may be self-therapy or therapy by other people. It is called CBT, you might have heard the name, is problem-solving therapy, how we solve this problem. Main purpose is to change our thinking, so our approach, our behavior to difficult situation changes. Now, self-therapy is best as we can utilize technique of changing our therapy to any difficult situation in the future. So I'm talking about self-therapy instead of therapy by other people. So I should analyze, think about it, analyze the situation myself, what could be done, and then use my strength, inner strength, that mental strength to do that. The first therapy is the self-therapy is the best. I will quote a research by Dr. Iqbal Ahmed, past president of American Academy of Geriatric Psychiatry. He suggests that for older adults, I'm talking about not everybody, older adults, psychotherapy is just as likely to be as effective first treatment of depression as taking an antidepressant. He's saying psychotherapy is best for older people especially, and they should do self-psychotherapy, analyze things and do that way. We feel strong that way, mentally strong that yes, I'm able to resolve the problem. Anyway, nowadays, we try not to prescribe medicines for psychotropic medicines, antidepressants for seniors because of effects on cognition and sedation. People cannot think properly, they sedate, they fall, all those things. Usually go problem. Psychotherapy is best and self-psychotherapy. Now summary, I will take 1 minute more. Problem, lockdown. Diagnosis, lockdown. Symptoms of lockdown, feeling lonely, anxiety and depression. Treatment, socialize by video calls, voice calls, Zoom meeting, just like this one, and problem solving psychotherapy. Change thinking, as we cannot change the situation. We have to change ourselves. And change, if we want something to change or people to change, first we have to change ourselves. And this again comes from I see about the changing ourselves. So medication is not necessary. So anything else? No, nothing else. That's enough. So thank you. Shukriya. आपका खास तौर से जनाब मुनायर खान साहब आप बस फरमाइए कुछ. Thank you, Dr. Shamsi. That was very nice. And I'm pretty sure that Jasim Bhai would want to suggest some things. And then if you have any other questions, please get your questions ready because after that we will have maybe about 5 minutes open mic to shout out so that Ahsan can go home. Thank you. I will say one thing more. Ji. Now, we mentioned Dr. Sim Pasha and we mentioned ISEEC. We are going to have a regular meeting on Wednesday evening of ISEEC. It's a good topic. We should attend it. And I can send the
link to that. Dr. Mazhar Khan can send Nazarim Pasha, anybody, or Dr. Barkat Charania, or some of you also go over there, so we can send you the link. All right, thank you for the office. 29th of this month. Shamsi, आपने जो 15 मिनट में इतनी चीजें कवर कर ली हैं, it was a big challenge, and I don't think I have anything to add. The one word you use, which is very, very important, and that triggered a lot of things in my mind. You use the word resilience in the middle of your talk. We as seniors, we have a tendency to underestimate our own resilience. And that's the positive part of our talk today, that we, in isolation, when we're depressed or when we're anxious sometimes, we forget that we are in the whole population segment, we are the most experienced, most qualified, most educated, most knowledgeable part of the population. That means that we have more knowledge about survival than all the people who are younger than us. And we should remind ourselves that things are not as bad as they may appear to. The only thing that makes us a little down is when we find that we are separated from the loved ones whom we always were able to depend on, and now it is very hard. So I think the positive part which I want to push here is, do not underestimate your past experiences, your knowledge, and that can be used even for your own personal survival status. This is all I wanted to add. And of course, Dr. Mazahir, you have got lots of addresses which I don't. Maybe हमारे जो है डॉक्टर मनाजिर साहब बात करेंगे तो आप जो है उनको फॉरवर्ड कर दें सबको तो वो भी ज्वाइन कर दें इंशाल्लाह. चरानिया या साहब या कोई और जो है, I mean, please, आप if anybody has a question, please ask them. Otherwise, I will request Asan to unmute everybody and let them shout. I said, I'm not a psychiatrist, but I do believe in self-psychotherapy. You have to talk to yourself and get out of that feeling of depression. So you're in games, even if you don't have somebody else to play games with you, there are a lot of games on the internet, iPad, I play chess, so you can play, word game, also jigsaw puzzle and all. That also is entertaining if there's nobody else to talk to, but talking on the phone is very good. But it's self-psychotherapy, that's what I call it. I don't know if that is a medical term or not, but you're almost talking yourself into getting out of that feeling of anxiety and depression, because I think it's common to feel depressed. And also, 2 days ago, both of us, we were playing snake and ladder after a long time. And then after that, we got fed up with it. It was too childish. So then we started playing cards. For 3 to 6 year olds, so I have to give it to my grandchild. But it was so much fun because I have not played since 60, 70, 60 years old. Manazir Khan sahab ne, we are coming back to the sort of infantile children's life, basically. So we will have to do that. Going back to childhood, you mentioned childish game. You would have noticed always talk childish sometimes. I do childish things very freely without fear of anybody. I think that is what Dr. Pasha said, that there's empowerment in us. We have power being older and we should use it, that power. There's a child in all of us. Yes. Saying something. She's saying something. Anybody wants to learn or play tennis? I'm a tennis coach. I could keep the 6 feet away and I could give some drills and do some challenge in the tennis court. We'll keep the distance also. MashaAllah. Free lessons. Okay. Risk is only 2, so you're good with tennis. Right. Okay. Okay. Riaz Bhai, I'm glad to see you here. Riazuddin, that's very good. I hope you're feeling all right. Acha Bhai Jamil, or anybody else you want to say something?
چیخنا شروع کر دیں ہم لوگ. ہاں بالکل کریں آپ سمجھے. ظاہر بھائی آپ ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں ظاہر بھائی. جی بتائیے. جو ایک وائلن جو پلے کرتے تھے اور گانا گاتے تھے, میرا خیال ہے ان کا بھی ایک سیشن ضرور ہونا چاہیے. انشاءاللہ عظیم خان کا. جی آج وہ شاید جوائن نہیں ہو سکے, بٹ ایکچولی جب میں نے یہ آپ کو یہ جو ویڈیو دکھائے کن فیکون کا, actually I had some of his music, and I thought I'll play that, and then but the session has become a little bit much longer, and I'll have to pay much more to Hassan now. He had allowed 1.5 hours. Now it's almost 2 hours. Thank you, Hassan. So should we start by 12:30? No, please. We know. میں اتنا عرض کروں گا جی کہ آج کی ماشاءاللہ یہ میٹنگ زوم کی بہت ہی کامیاب نظر آ رہی ہے, اور میرے خیال ہے آپ سب بیئر آؤٹ کریں گے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ہوسٹ سے کہ اس کو اگر کنٹینیو کیا جائے تو میرے خیال اس میں بڑی معلومات ہیں آپس میں. تو آج کے حالات حاضرہ کی ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے, اور جو آپ نے ماشاءاللہ وہ مسجد کا اور اس کا جو گیت سنایا اے آر رحمان کا, یہ ماشاءاللہ دس از another addition. So I think if we continue, I request that we should continue this Zoom meeting on whatever schedule you have. So I'll appreciate and I congratulate everybody, and especially Dr. Mazhar and Hassan bhai. Shafiq bhai, thank you very much. Shaista, you want to say something? Yes, مجھے بس یہ کہنا تھا کہ بہت یہ زوم بہت انجوائے کر رہے ہیں, اور مجھے تو اور زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ کسی وجہ سے اس کو ہر ہفتے کر دیں. Inshallah, we'll see. We'll see. What we can do is we can do it for a shorter period of time, because every time you don't want to listen to Dr. Shamsi or Pasha or Noor Pasha or anybody. So we can have just simple gathering for half an hour, 45 minutes. People show their faces, whoever comes, whoever goes, we can do it. Inshallah. اچھا بھائی اگر کچھ اور I think we can restrict it to 1 hour. That will be sufficient. Inshallah. Or Shafiq bhai, we have it scheduled every 2 weeks. So perhaps since you came in first time, so inshallah we'll do that. آپ یونس بھائی, یونس شیخ, آپ اگر ہمارے یہ ایک دعا کر دیں تو یہ will close the shop today. آواز نہیں آ رہی. انمیوٹ کریں. So he's unmuted. He's unmuted. I think he may have stepped. Okay, now it's unmute ہو گیا. Thank you. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ, ہمارے مظاہر بھائی نے اتنا ارینجمنٹ کیا ہے ہم سب کے لیے جس میں بہت معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو سن بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو جاری رکھے. ظاہر بھائی کو صحت تندرستی عطا فرمائے. جتنے سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, سب کو صحت تندرستی کے ساتھ اپنی حفاظت میں رکھے. کورونا کے وبا سے تمام مسلمان, تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو صحت مند رکھے. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Okay, thank you everybody. We will see you inshallah soon. जी. Jazakallah khair. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज जी. अल्लाह माशाअल्लाह. Alhamdulillah. Allah Hafiz. Allah Hafiz.